1. Assertion, noun. حتمی موقت إقرار واثق دعوة. A confident and forceful statement of fact or belief. 2. Reign, noun. عنان لگام اختیار. Keep under control, restrain. 3. Fraternity, noun. गिरो فرقة अंजुमन برادری. A group of people sharing a common profession or interests. 4. Fuss, noun. बिलावजा परेशान होना हंगामा हलचल. A display of unnecessary or excessive excitement, activity, or interest. 5. Intrigue, verb. चश्म पोश करना दगा दीवानी साजिश. Arouse the curiosity or interest of, fascinate. 6. Woe, noun. अफसोस शदीद गम. Great sorrow or distress, often used hyperbolically. 7. Ostensibly, adverb. बादी अल नजर में बज़ाहिर ज़ाहिरना. As appears or is stated to be true, though not necessarily so, apparently. 8. Misery, noun. बदनसीबी तकलीफ ख्वारी. A state or feeling of great physical or mental distress or discomfort. 9. Lament, verb. नौहा रूना गम में चीखना. Express passionate grief about. 10. Prosaic, adjective. बेलुत्फ बेमज़ा आम. Having or using the style or diction of prose as opposed to poetry, lacking imaginativeness or originality. Islamabad, the capital of gossip, is now firmly divided into two camps: those who know the elections will not be held and those who are not sure because they can't see the route through which the delay will be orchestrated. The small minority which is still certain that elections are to be held is far too small and irrelevant to count at the moment. If rumors are to be believed, the PDM and the powers to be are in no mood for elections, for the popular will is in PTI's favor. Imran Khan's popularity is seen to be soaring, thanks to his biennia narrative, the state of the economy and the PDM's bumbling, or rather that of the Prime Minister and his financial wizard. And as no one really wants him to win, the elections will not be held. While Islamabad is home to many rumors which may have a short shelf life, this particular piece of gossip is lent credence to by the assertions of PMLN leaders and ministers. Some of them, such as Ahmed Ali Khan or Irfan Qadir, have baldly stated that elections held after the constitutional limit will be valid or have hinted that the economic situation doesn't warrant such an exercise. A recent disclosure by the KP governor points in a similar direction. But this is easier said than done, like most deeds in Pakistan, including last year's vote of no confidence or Ishaq Dar's promise to rein in the dollar. So far, only Dar Sahib has been reined in, thanks to the IMF which refused to blink. The first challenge remains the legal way. The constitutional provisions for the National Assembly are there, say the legal eagles, but there is no excuse to delay the provincial assembly elections. The former, on the other hand, can be extended for 6 months or so. In other words, if the provincial assembly elections are to be delayed, it will either require the courts to resort to the doctrine of necessity and legalize the impossible or violation of the Constitution in an uglier manner. One finds it hard to believe that technocrats can be a solution. Will the courts oblige, and if so, will the legal fraternity, among others, stay quiet? The answer varies, depending on who you ask. The PTI will kick up a fuss for sure. But this also leads to a second question. What will remain in place? Will it be the existing setups of a PDM government in Islamabad, along with the PPP and BAP in the provinces? And then these caretaker setups in Punjab and KP? The latter in particular is intriguing, for Mohsin Naqvi and his crew don't inspire much confidence as a cabinet which can remain in charge for too long. Naqvi's professional achievements have been justly highlighted across our media platforms, but do they equip him to provide the direction for the budget in a year beset with financial difficulties?
Or is it that the much-hyped technocratic setup will finally materialize in all the key places? These nameless but hardworking and focused men, and hopefully, women who will know how and what to do and do it immediately, without concern for public opinion and elections. This, in fact, has been a persistent rumor since last year as the PDM struggled with the pressures of an economic meltdown and the demands of election. Those whose eyes gleamed at the prospect, I don't really refer to Shahbarzadi here, are said to include PMLN wallahs who thought such a setup would give them a chance to also claim victimhood for being forced out of power once again, and blame someone else for the economic woes. But this raises questions too. What would give such a government the legal validity? And about who would become the face of the tough decisions, if all the parties are ostensibly out in the cold and free to bash the nameless ones, imposing miseries on the people? Let me present a more concrete example. At 8 p.m. every weeknight, as Hamid Mir is joined by Usman Dar and Musaddiq Malik who lament about the miseries of the people, who will be sitting on the third chair, explaining why these decisions were needed to save the Riyasat. And even if someone is sitting on this chair, who will he or she speak on behalf of? Kaqet Aziz may have been the technocrat par excellence, but he spoke and acted on behalf of Musharraf. And people have a way of finding their Musharraf, if I may say so. And for these prosaic reasons, doubting Thomases like myself find it hard to believe the technos can be much of a solution. Moreover, how long can such governments, representing no one and everyone, stick around for to make the hard decisions? For our hard decisions simply begin with this IMF package, and then the next program Pakistan will have to go into immediately and then figure out some structural reforms to avoid a forever cycle, which the rest of the world is no longer interested in offering. So where will we finally end this project? Or is the aim to simply exhaust those supporting the PTI? No one who is sure of the delays can provide any concrete answers to these questions, which is par for the course in Pakistan, where everyone is aware of the end results without knowing exactly how we'll get there. It's a bit like Ishaq Dar, who was sure in London that he knew the real value of the dollar and how to talk to the IMF, but then got stuck at the first roadblock he hit after becoming finance minister. The reason for this lack of clarity is not seen to lie with the government solely, but perhaps also the indecision or confusion elsewhere. Indeed, Pakistanis love the analogies with Neros and the people aboard the Titanic, but equally apt is Shakespeare's Hamlet and his indecision. And this indecision is not just about elections but also the economic agenda, which will not become the primary concern in the absence of political stability. So why not aim for political stability rather than half-baked solutions and stopgap measures? The writer is a journalist. Published in Dawn, January 31, 2023. Subscribe our channel. Dawn Vocabulary. youtube.com/@dawnvocabulary. गुपशप का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद अब मजबूती से दो कैंपों में बटा हुआ है। वो लोग जो जानते हैं कि इंतखाबात नहीं होंगे और वो जो यकीन से नहीं कह सकते क्योंकि वो रास्ता नहीं देख सकते जिसके जरिए ताखीर की मंसूबाबंदी की जाएगी। वो छोटी सी अक़लियत जो अब भी यकीनी है कि इंतखाबात होने वाले हैं, इस वक्त गिनती के लिए बहुत छोटी और गैर मुताल्लिका है। अगर अफवाहों पर यकीन किया जाए तो PDM और दीगर ताकतें इंतखाबात के मोड में नहीं हैं क्योंकि अवामी ख्वाहिश PTI के हक में है। इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा देखा जा रहा है, जिसकी वजह उनके बयानिया, मईशत की हालत और PDM की बौखलाहट अब फिर वजीर आज़म और उनके माली जादूगर ओहे की मकबूलियत है। और चूंकि कोई नहीं चाहता कि वो जीते, इसलिए इंतखाबात नहीं होंगे। अगरचे इस्लामाबाद बहुत सी अफवाहों का घर है जिनकी जिंदगी मुख्तसर हो सकती है, लेकिन इस खास गुपशप को मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं और वज़रा के दावों से तक़वियत मिलती है। इनमें से कुछ जैसे अहमद अली खान या इरफान कादिर ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि आईनी हद के बाद होने वाले इंतखाबात दुरुस्त होंगे या उन्होंने इशारा दिया है कि माशी सूरत हाल इस तरह की मश्क की मुतकाज़ी नहीं। KP के गवर्नर का एक हालिया इंकिशाफ भी इसी समत की तरफ इशारा करता है। लेकिन ये कहना ज़्यादा आसान है
जैसा कि पाकिस्तान में ज़्यादातर अमाल बशमूल गुज़िश्ता साल अदम एतमाद का वोट इसहाक डार का डॉलर पर लगाम लगाने का वदा। अब तक सिर्फ डार साहिब को लगाम दी गई है IMF की वजह से, जिसने पलके झपकने से इनकार कर दिया। पहला चैलेंज कानूनी रास्ता है। कानूनी माहिरीन का कहना है कि कौमी असेंबली की आईनी शिक्के मौजूद हैं, लेकिन सूबाई असेंबली के इंतखाबात में ताख़ीर का कोई बहाना नहीं। दूसरी तरफ पहले को 6 माह इससे ज़्यादा के लिए बढ़ाया जा सकता है। दूसरे लफ्ज़ों में, अगर सूबाई असेंबली ओहे के इंतखाबात में ताख़ीर होती है तो इसके लिए या तो अदालतों को ज़रूरत के नज़रिए का सहारा लेना पड़ेगा और नामुमकिन आइन की खिलाफ वर्जी को बदतरीन अंदाज में कानूनी शक्ल देना होगी। किसी को ये यकीन करना मुश्किल लगता है कि टेक्नोक्रेट्स इसका हल हो सकते हैं। क्या अदालतें इसकी पाबंद होंगी, और अगर ऐसा है तो क्या कानूनी बरादरी दीगर लोगों के अलावा खामोश रहेगी? जवाब मुख्तलिफ होता है। इस पर मुनहसर है कि आप किससे पूछते हैं। PTI यकीनी तौर पर हंगामा बर्पा करेगी, लेकिन इससे एक दूसरा सवाल भी पैदा होता है, जगह पर क्या बाकी रहेगा? क्या यह इस्लामाबाद में PDM की मौजूदा हुकूमत और सूबों में पीपल्स पार्टी और BAP की हुकूमत होगी? और फिर पंजाब और KP में ये निगरान सीट अप। खास तौर पर यह दिलचस्प है क्योंकि मोहसिन नकवी और उनके अमले को काबीना के तौर पर ज़्यादा एतमाद हासिल नहीं है जो ज़्यादा अरसे तक इंचार्ज रह सकती है। नकवी की पेशावराना कामयाबियों को हमारे मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मुनसिफाना तौर पर उजागर किया गया है, लेकिन क्या वो उन्हें माली मुश्किलात से 2-4 साल में बजट की समत फराहम करने के लिए तैयार करते हैं? आइए है कि बहुत ज़्यादा तशहीर शुदा टेक्नोक्रेटिक सीट अब आखिरकार तमाम अहम जगहों पर अमल में आएगा। ये बेनाम लेकिन मेहनती और तवज्जो मरकूज करने वाली ख़वातीन और उम्मीद है जो अवामी राय और इंतखाबात की परवाह किए बगैर ये जान लेगी कि किस तरह और क्या करना है और फौरी तौर पर करना है। दर हकीकत ये गुज़िश्ता साल से एक मुसलसल अफवाह है क्योंकि PDM माशी बहरान के दबाव और इंतखाबात के मुतालिबात से नबर्द आजमा है। जिन लोगों की आंखें इस इम्कान पर चमक रही थी, मैं यहाँ शबरज़ैदी का जिक्र नहीं करता, इनमें मुस्लिम लीग नून के वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने सोचा था कि इस तरह के सीट अप से उन्हें एक बार फिर इक़्तिदार से बेदखल किए जाने का दावा करने का मौका मिलेगा और माशी बदहाली के लिए किसी और को मोरिद इल्ज़ाम ठहराया जाएगा। लेकिन इससे भी सवालात उठते हैं, ऐसी हुकूमत को कानूनी जवाज़ किया देगा? और अगर तमाम पार्टियां सर्दी में निकल और बेनाम लोगों को कोसने और आवाम पर मसाइब मुसल्लत करने के लिए आज़ाद हों तो सख्त फैसलों का चेहरा कौन बनेगा? मैं एक और ठोस मिसाल पेश करता हूँ। हर हफ्ते रात 8 बजे जब हामिद मीर के साथ उस्मान डार और मुसद्दिक मुल्क भी होते हैं जो अवाम की तकालीफ पर अफसोस का इजहार करते हैं, तो तीसरी कुर्सी पर कौन बैठकर वजाहत करेगा कि रियासत को बचाने के लिए उन फैसलों की ज़रूरत क्यों पड़े? और अगर कोई इस कुर्सी पर बैठा भी है तो वो किसकी तरफ से बात करेगा? शौकत अजीज भले ही टेक्नोक्रेट थे, लेकिन उन्होंने परवेज मुशर्रफ की तरफ से बात की और काम किया। और अगर मैं ये कहूँ तो लोगों के पास अपने मुशर्रफ को तलाश करने का एक तरीका है, और उन पेशा वराना वजूहात की बना पर मेरे जैसे थॉमस पर शक करने से यकीन करना मुश्किल है कि टिकनूज एक हल हो सकता है। मजीद बरा, ऐसी हुकूमतें जो किसी एक और हर एक की नुमाइंदगी नहीं करती हैं, कब तक सख्त फैसले करने के लिए कायम रह सकती हैं? हमारे सख्त फैसलों का आगाज सिर्फ IMF पैकेज से होता है और फिर अगले प्रोग्राम में पाकिस्तान को फौरी तौर पर जाना होगा और फिर कुछ ढांचा जाती इस्लाहात करना होंगी ताकि हमेशा के चक्कर से बचा जा सके जिसे बाकी दुनिया अब पेश करने में दिलचस्पी नहीं रखती। आखिर हम इस मंसूबे को कहाँ ख़त्म करेंगे? इसका मकसद सिर्फ PTI की हिमायत करने वालों को ख़त्म करना है। ताख़ीर पर यकीन रखने वाला कोई भी शख्स उन सवालात का कोई ठोस जवाब फराहम नहीं कर सकता जो कि पाकिस्तान में कोर्स के बराबर है, जहां हर कोई हतमी नताइज से आगाह है और ये नहीं जानता कि हम वहां कैसे पहुंचेंगे। ये इसहाक डार की तरह हैं जिन्हें लंदन में यकीन था कि वो डॉलर की असल कीमत और IMF से बात करने का तरीका जानते हैं, लेकिन फिर वजीर खजाना बनने के बाद पहली रुकावट में फंस गए। वजाहत की इस कमी की वजह सिर्फ हुकूमत के पास नहीं है, लेकिन शायद कहीं और भी फैसला न करने या उलझन।
दर हकीकत पाकिस्तानी नीरोस और टाइटैनिक पर सवार लोगों के साथ तशबीहात को पसंद करते हैं, लेकिन शेक्सपियर की हैमलेट और उनकी गैर फैसला साजी भी इतनी ही मुनासिब है। और ये अदम फैसला सिर्फ इंतखाबात के बारे में नहीं बल्कि माशी एजेंडे के बारे में भी है, जो सियासी इस्तेहकाम की अदम मौजूदगी में बुनियादी तशवीश नहीं बनेगा। तो क्यों ना आधे पक्के हल और स्टॉप गैप इकदामात के बजाय सियासी इस्तेहकाम का हदफ रखा जाए। मजमून निगार एक सहाफ़ी हैं। अखज़ शुदा बतारीख 29 जनवरी 2023। For more videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary. YouTube.com/@dawnvocabulary. Like, subscribe, share and comments.